Andarki namaste and a very warm welcome to the IAS Hub. The Constitution has given you many different types of rights, be it right to equality, right to freedom. Likewise, आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स है. इनमें से अगर कोई भी राइट्स वायलेट हुआ, आप कोर्ट चले जाते हो. बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज गिवन सर्टेन राइट्स टू दीज एनिमल्स. नाउ प्रॉब्लम यह है, इस एनिमल्स को ये नहीं पता है उनके पास राइट्स है. तो इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सर्टेन स्टैट्यूटरी राइट्स, सर्टेन अदर एक्ट्स हैज मेड श्योर दैट the protection of these animals is the responsibility of this human being, and any violation of this, the human being shall be punished. इसीलिए जितने भी laws with respect to animals है, they are always designed in the name of protection of that animal. Now that protection is the responsibility of this human being. उनमें से एक ऐसा famous act है which is considered to be the mother of all the acts in the environment, that is your Wildlife Protection Act. एंड इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू वी हैव गॉट सम नेशनल पार्क्स. और इस नेशनल पार्क्स का काम क्या है? इट इज टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड द हैबिटेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट हियर? हैबिटेट मीन्स इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द एंटायर एरिया इन विच द एनिमल्स लिव. सो ऐसे ही द प्रोटेक्टेड एरियाज हैव आल्सो बीन डेजिग्नेटेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. And this is the first video in the series of the national parks where we shall be discussing the national parks in a detailed manner. As of now, there are 109 national parks until March 2023. तो हम क्या करने वाले हैं, इस एक सीरीज के रूप में ये सारे चीज डिस्कस करेंगे and in a detailed manner. Prelims में हर साल national parks के around you have some questions, either in the form of rivers that are flowing through the national parks, animals, flora, fauna, topography. These things are there. No doubt. You cannot deny that without reading the national parks, you're going to go to the preliminary examination. अगर ये गलती नहीं करना है आपको. इसीलिए हम इस सीरीज में हर एक नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क and wildlife sanctuary, as well as what are the provisions that are given in the wildlife protection act. For example, अगर कोई एरिया को sanctuary डिक्लेयर करना है, जैसे wildlife sanctuary डिक्लेयर करना है, now will the state government do or the central government do? For example, if there is any territorial water area and the state wants to declare that area as a sanctuary, can the state government do it or the central government permission required है? अगर कोई ऐसा सेंचुरी डिक्लेयर किया, इसमें आप अपना डोमेस्टिक एनिमल्स लेके ग्रेजिंग के लिए अंदर जा सकते हो, या कोई इंसान को सेंचुरी में कुछ राइट्स है क्या? किसी इंसान को नेशनल पार्क्स में कुछ राइट्स होता है क्या? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विच आर फंडामेंटल क्वेश्चंस एवरी एस्पायरेंट हैज, एंड इसके ऊपर कई सारा कंफ्यूजन है बच्चों को. इसीलिए आज हम ये जो टॉपिक से जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. सो दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स एरिया. इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज वन सच एक्ट विच विल रिजॉल्व मोस्ट ऑफ योर डाउट्स. देखिए, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इफ यू लुक इनटू the declaration of national parks मान के चलो, the declaration of wildlife sanctuaries, biosphere reserves, community reserves, conservation reserves, everything comes through this act. And recently ये जो act है इसको amend भी किया गया था, ये amendments भी हमें देखना चाहिए. नेशनल पार्क्स हम आगे डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल मैनर, और कौन सा ऐसा नेशनल पार्क डिस्कस करने आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उस नेशनल पार्क को हम डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल वे. बट आज की इस वीडियो में विल ट्राई टू confine ourselves to the concept of Wildlife Protection Act, and इस Wildlife Protection Act के जरिया we'll try to understand what are the rights that are given to the animals, what are the rights that are given to the human being, and what is the fundamental difference between a national park as well as a wildlife sanctuary. बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, तो इसीलिए आई हैव डायरेक्टली गॉट यू द रॉ एक्ट, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट नो there is not enough material in the market or not enough material that is given to you in the classroom. So that's why we shall be going through the direct raw act, और मैं इसमें समझाऊंगा प्रीलिम्स के लिए क्या ऐसे चीजें जो इंपॉर्टेंट है. देखो यार, पहले this wildlife protection act has clearly defined few things. Now what are the definitions that are given in the wildlife protection act? It is number 1, what is an animal? It is defined in this act. Likewise, chief wildlife warden कौन होता है?
Next, circus. What is a circus? That is also defined in this act. And if you look into habitat of an animal, क्या होता है वो भी defined है यहाँ पर. Hunting. What do you call it as a hunting? Is killing an animal hunting? Or if you have an eggs of an animal, if you are stealing that, or if you theft की act, can that call be hunting? Yes. All these things have been defined in under this act. Or else, if you're poisoning an animal, that is also considered to be an hunting. Likewise, what is a livestock? Livestock भी डिफाइंड है इस एक्ट में. नेशनल पार्क क्या होता है वो भी डिफाइन किया गया. और प्रोटेक्टेड एरिया, रेगुलेटेड एरियाज और रिकॉग्नाइज्ड जूस, रिजर्व फॉरेस्ट, सैंचुरीज एंड स्पेसिफाइड प्लांट्स. वैसे ही वर्मिन क्या होता है, साथ के साथ वाइल्ड एनिमल क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है. इतने सारे एंटिटीज इस एक्ट में डिफाइंड है. और आप देख लीजिए, बीट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बीट द बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स. इन 5 चीजों में एनिमल मतलब उनका डेफिनेशन है यहां पर. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का क्या ऐसा राइट्स है, ये सारे चीज इसमें क्लियरली मेंशन्ड है. तो इसीलिए विल गो लिटिल मोर इनटू डिटेल एंड विल लुक इनटू द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सी हियर, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेज दैट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट करना है. और ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होता है? वन ऑफ द आईएफएस ऑफिसर. इट कुड बी वन अमंग यू इन द फ्यूचर. ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो है, दिस पर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सी दिस एज अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इट ही विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. Likewise, the state government will also appoint the other wildlife wardens and honorary wildlife wardens. Now, this is what the act says. According to that, the chief wildlife warden and the honorary wildlife warden जो है and other officers are appointed under this section shall be subordinate to the chief wildlife warden. That means all the other wildlife wardens are subordinate to the chief wildlife warden. And this act also tells you that there shall be an establishment of the National Wildlife Board. That is National Board of Wildlife. और इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन कौन है और चेयरपर्सन कौन है? इट इज नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर. And one more interesting aspect is that whenever a preliminary examination question that can be asked here is that इसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मेंबर्स भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है. Likewise, that is your chief of defense staff. अरे यार, chief of the army staff और chief of the defense staff, this is a new post that is created. But इस act में the chief of the army staff is also a member of the National Board of Wildlife. Now, what does the army staff has to do with the National Board of Wildlife? So these kind of questions might confuse you in the exam. इसीलिए अगर बेयर एक्ट देखते हो, इसमें प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन इज द पर्सन द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. वैसे ही पार्लियामेंट, the parliamentary members shall be there in this. Likewise, there are other members which have been put forward. So ये भी इस एक्ट में mentioned है. At the same time, there shall be an establishment of the स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड. इस स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा और चेयरपर्सन कौन होगा? इट विल बी योर चीफ मिनिस्टर. एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. लाइकवाइज कुछ फंक्शंस भी डिफाइंड है इसमें. सो हियर इफ यू लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सारे चीज यहां पे मेंशन्ड है. एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, अरे यार, if there is an animal, if it is turning out to be a threat to the human beings, can you kill that animal? Absolutely. Now, the chief wildlife warden, in written, the warden will issue that if this animal is turning out to be a threat to the human life, now the chief wildlife warden can issue the rules and regulations to kill that animal. वैसे ही अगर कोई ऐसा एनिमल है जो डिजीज्ड है and it is in a vegetative state, that wildlife warden will have the rights to kill it. So these are some of the aspects that have been declared under this act. वैसे ही any wild animal killed or wounded in defense of any person shall be the government property. That means अपने आप की डिफेंस में आप एक वाइल्ड लाइफ को you can kill it, but provided that shall not be within the territorial area of the national park, wildlife sanctuary or any protected area. This act clearly talks about these things. और बहुत सारे बच्चों को ये confusion है, and we'll also be discussing in a detailed manner about the
sanctuaries. देखो इस एक्ट में it is very very clear that who will declare the wildlife sanctuaries. The declaration of the wildlife sanctuary can be done by both the state government and the central government. See here, the state government may, either the state government or the central government, both of them can declare a particular area as sanctuary. लेकिन इसमें अगर कोई ऐसा एरिया है, imagine that there is a small area which is part of the coastal region, और इस कोस्टल रीजन के अंदर कुछ ऐसा एरिया है जो पानी, टेरिटोरियल वाटर दैट इज नियर टू द 12 किलोमीटर्स, दिस टेरिटोरियल वाटर द स्टेट वांट्स टू डिक्लेयर दैट एरिया एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. बट in such a situation, the state has to take the permission of the central government, and central government will decide whether to declare this area as a sanctuary or not. So this is the only provisions. And what are the restrictions that are given? Who are the persons who can enter into the sanctuaries, and what rights the person have? And all these things have been clearly declared in this. Now, if you look into the restrictions that have been put into the wildlife sanctuary, the restrictions are, other than those designated in this particular act, no one can enter into the wildlife sanctuary. And if at all, anyone who enters, there is a fine that shall be imposed, or a jail term also. Now let us see who are those people who are designated to go into the wildlife sanctuaries, and there are some people who are living in the wildlife sanctuary. कौन सा ऐसा राइट्स है जो इंसान को दिया गया, कौन सा ऐसा राइट्स है जो एनिमल को दिया गया. और बिफोर आई गो एनी फर्दर, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग. The fundamental difference between a national park and a wildlife sanctuary is that a national park aim is to protect the entire habitat of a region. The wildlife sanctuary's aim is to protect the designated animal. For example, let us try to understand that this is a area which is a sanctuary. ठीक है? If suppose you declare this particular area as a sanctuary, in the sanctuary you have trees, you have the remnants, the forest produce, और कुछ animals भी है. उसके अलावा there is a river, right? Just imagine like this. And in such a situation, if you want to declare this as a sanctuary, there shall be a reason to declare. Now, what are you going to protect in that? If you wanted to protect this particular animal, maybe you declare a sanctuary for a deer, you declare a sanctuary for bear, or you declare a sanctuary for any X animal. Now, your ultimate agenda is to protect that animal. Now, in the due protection of this animal, sometimes you go and protect the habitat also. If your aim is to protect a designated animal, then only you will declare that particular area as a sanctuary. But लेकिन आपका aim ये है that you wanted to protect this entire area and every animal in that area, then you will declare this as a national park. National park's main aim is to declare and protect the habitat. Wildlife sanctuary का main aim है एक particular animal को target करके उसे protect करना. इनमें बहुत सारा अंतर है, इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर देर आर राइट्स दैट आर गिवन टू द ह्यूमन बींग्स. पीपल कैन रिसाइड इन दैट राइट. नाउ हु कैन रिसाइड? एनीवन हु हैज अ प्रॉपर्टी, they can reside. See here, the act clearly mentions that restriction on entry into sanctuaries. Now, no person other than who is the chief wildlife warden or any person designated or any person who gives the permission or any person who gets the permission from the chief wildlife warden, that person can enter. Or else a public servant on duty or a person who is accommodating that public servant or a person who has been permitted by the chief wildlife warden, or else a person who has rights over immovable property within a wildlife sanctuary. Now, many tribals in India, they do have their houses constructed within the wildlife sanctuary and they live within the wildlife sanctuary. It is part and parcel, क्योंकि उनका कुछ rights they have been having since the establishment of this wildlife sanctuary and before the establishment of this wildlife sanctuary. इसीलिए a person passing through the sanctuary along the public highway and a person who has any rights over the immovable property within the sanctuary is also allowed to move in and out of that wildlife sanctuary. So by this, it is very clear that few people can go into the wildlife sanctuary if you have an immovable property in it, right? Okay. Next, come to कौन सा ऐसा permissions दिया जाता है if you want to enter into the wildlife sanctuary by the chief wildlife warden. Chief wildlife warden can give permission to photography के लिए भी दे सकता है. He can also give permission to the scientific research as well, tourism as well,
एज वेल एज ट्रांसैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेसेस के लिए भी 4 ऐसे चीजें जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशंस दे सकता है. दैट मीन्स टूरिज्म इज क्लियरली अलाउड इन दी वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज. नाउ दीज आर सम थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद द वाइल्ड लाइफ सैंचुरी. वाइल्ड लाइफ सैंचुरी में जो लॉस दैट आर देयर, दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड हैबिटेट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो इसीलिए द टूरिज्म इज अलाउड. नाउ व्हेन इट कम्स टू नेशनल पार्क, नो राइट्स आर गिवन टू द ह्यूमन बीइंग. Not even animals or livestock is allowed to go into the go into the national park and graze there. Now let us also try to understand who declares the national parks and who is the one who will be taking care of the national parks. See, the national parks declaration is also done by the state government as well as central government. Now why state and center? Because forest is a subject of concurrent list. So that's why both of them, the state government and the central government, can legislate on it. Right? So here, once the national park is declared, so any changes in the boundary, the state government cannot do without passing a small bill in the legislature. Boundary alterations to nahi kar sakta hai. See here, now let me directly take you to the what things can be done and what things cannot be done in a national park. See, the national parks, it clearly says no grazing of any livestock. Within the national park, you cannot take the animals and enter into the national park. But wildlife sanctuary के अंदर ये कर सकते हो आप. बहुत सारा ऐसा wildlife sanctuaries है. Recently, there is a court case that has been in news regarding the Malai Madu and the Mudumalai Wildlife Sanctuary, जहाँ पर the forest tribal community which is there, they wanted to carry that cattle and take that cattle into the forest and graze them. The High Court of Madras, it has clearly said that now you cannot take it. Now, it is a local act that has been made which is confined to the Tamil Nadu government itself. But as of now, the animals are allowed into the wildlife sanctuaries and graze them. But when you look into the national parks, no grazing rights. वैसे ही the animals are given greater priority and the human beings are given lesser priority. Now, this is what is the agenda of a national park. The ultimate aim of a national park is to protect the habitat. And in the protection of the habitat, if you look into, Indian government has declared as of now 109 national parks. इनमें से 109 national parks काफी important है, जो पिछले 1-2 साल के अंदर जो declare किया. These things become very, very important for the examination. And here, if you look into, Jim Corbett is considered to be the first national park in India as well as in Asia. Now, when is this Jim Corbett National Park declared? See, Jim Corbett as a national park, earlier with a different name, it has been there since 1936. But Wildlife Protection Act to 1972 में आया. लेकिन Jim Corbett National Park with a different name is there since 1936. So it is actually under the Government of India Act, under the protection of the forest, we have got this a designation to a particular area as a national park. But लेकिन इसको एक full-fledged rights, definitions and all, they are given in the Wildlife Protection Act of 1972. So I think you have got some insights into the Wildlife Protection Act and the Wildlife Sanctuary. आगे next part of the video में we'll go into each and every national park which is there in India, and in a series format we'll be covering them. So कौन सा ऐसा नेशनल पार्क हमें कवर करना है, यू कैन क्लियरली मेंशन देम इन योर कमेंट सेक्शन. हम उस नेशनल पार्क को पिकअप करेंगे. और उसके अलावा देर आर मेनी हाई आउटपुट टीम्स विच वी हैव कम अप विथ. उनमें से देखिए यार, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक तरीका होता है, दैट इज वेन एवर यू स्टार्ट रीडिंग, रीड अ टॉपिक इन द नेम ऑफ थीम. मतलब थीम वाइज पढ़ना चाहिए. जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिया तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पूरा कवर करो, और एनिमल को लिया तो एनिमल को कवर करो. जैसे नेशनल पार्क्स, यू हैव टू कवर नेशनल पार्क्स. लाइकवाइज यू गो इनटू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में अगर themes, if you look into solar radiation is a theme, atmosphere and atmospheric circulation is a theme. Likewise, we have given the most important themes that can be asked in the examination and most important themes that have been asked in the past 10 years. You can go and download them from our website. Here, go and type the high output themes for prelims. आप जैसे ही high output themes, when you click, this will direct you to the website. From there, for each of these subjects, you can go and directly download the high output themes.
एंड कौन सा ऐसे नेशनल पार्क्स हमें आगे कवर करना चाहिए, आप हमें बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल बी पिकिंग अप एंड विल बी डूइंग इट इन अ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर मैनर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. Thank you, and we'll be seeing you in the next video.